You are tuned to the FM Gold channel of All India Radio Delhi on 100.1 MHz. This is All India Radio. In our special program, Insight, now we bring you a discussion on Defence Ministry's clearance of Aatmanirbhar Bharat projects worth 29,000 crore rupees. The participants are Lieutenant General Sanjay Kulkarni, Defence Analyst, and Ajay Banerjee, Journalist. We will be discussing an important decision with the Ministry of Defence taken, which is regards to procurement of some 28,732 crore, which is about swarm drones, new kind of bulletproof jackets for the troops, and also carbines used in close quarter battles. General Kulkarni, we would need your expert advice in telling our listeners what is a close quarter battle and what is a carbine, how it is used. We are ordering 4 lakh of those, sir. First and foremost, I think it's a fantastic decision that we've gone in for almost 28,000 crores of indigenously designed and developed. And that is what is very important, the Buy Indian concept that we've decided. And basically in which there are carbines, there are swarm drones, there are BPJs, and of course associated items for 14 petrol boats for the Coast Guard and the indigenously designed 1,250 kilowatt capacity marine gas turbine engine for the Kolkata class ship. But what you just said is the CQB carbine. That's something which we really need to look into it, because there was a JVPC, a joint venture carbine also with the DRDO and the Ordnance Factories that was there for a long, long time. They also would be there. But this particular one that we are looking at, the carbine, the CQB, we had earlier what we call as a 9mm carbine. Now, what we are looking at today is in a concept which is more hybrid, in a concept where it can be used multiple for even against the terrorists. So in that concept, we are looking for a weapon which is, well, with a range of about, say, 200 meters, but the ability, the weight not more than about 3 odd kgs, with Picatinny rails, with, of course, the most important part of it is that it should be able to function in areas which is minus 20 degrees and also up to plus 45 degrees. Most important of the entire thing is the reliability part, the accuracy part, the affordability part, and the toughness part. That's what we are looking at in the CQB now that we've closed water battle, rather than a carbine which we had earlier, which had a range of only about 30 meters. That is about 100 yards. This is the one we are talking about is 200 meters, which is virtually a part kind of a AK-47, but, well, the AK could be a little heavier. So it has its other GSQRs, which I hope very soon, because earlier also the Caracal we had gone in for, RFI was issued, but then because of its technology, which was totally imported, at the same time the cost was also not affordable, and therefore that had to be stopped. And with this Buy Indian IDDM, indigenously designed and developed with 60% indigenously component, I think that's a very big advantage, and the whole of Indian players will be found. And I found the Ordnance Factory with whom I was associated for some time. They also had made 5.56 into 45mm CQB weapon, which hopefully should find good competition. It would be able to give for all others if they're really economically designed. I always call it economically designed because anything and everything must be looking good, must be affordable, must be accurate, must be reliable, must be sturdy, must not, cut anybody anywhere, and be able to deliver bang for the buck. I think we have the ability, and so are the other players also now in the CQB. General Kulkarni, I would want a clarification from you very briefly. CQB means close quarter battle for our listeners. And of course, sir, 4 lakh means that we are also looking at these carbines being used not just in the counter-insurgency and counter-terrorism operations, but also probably at the LOC and the LAC. Would that be a correct assessment? You're absolutely right. That is why I said the carbines that we had earlier had a range of 30 meters. That is about 100 yards. The one that we are now demanding is about 200 meters. So it's it would be wrong on my part to say that it is rifle, but yes, it's a kind of a cross between an old carbine with the characteristics of its light, reliability and accuracy, but of course the ability to be able to use on the LOC, LAC, and also in the insurgency prone area. Right. And sir, the Defence Acquisition Council, which is headed by the Defence Minister Rajnath Singh, also cleared specific bulletproof jackets, Indian standards BIS 6 level. General Kulkarni, BIS 6 level would mean it is safe for a sniper shot. It will save a troop from a sniper shot also. Is that correct? Absolutely right. And again, as I say, indigenously designed and developed with 60%
90% of the Indian components we are capable. We have delivered earlier bulletproof jackets. This one, what you rightly said, BIS 6 level is protection from sniper, because snipers seem to be taking a big role now in the kind of hybrid warfare that we are all into, and hence the requirement is BIS 6 level protection. That's against the sniper. Sir, the DSE also cleared a specific 3 proposals of the Indian Army costing 8,599 crores. These 3 proposals are the guided extended range rocket ammunition, which now will bring the range of 75 kilometers with an accuracy of 40 meters. It also has an aerial denial ammunition type, not a weapon, and a rocket ammunition. And it also cleared the Infantry Combat Vehicle Command Post equipped with technology to collect and disseminate, share and present real-time information to commanders. So these 3 equipments, could you start off with the infantry combat vehicle, what its need in today's world, interconnected world, then go on to the munitions, the guided munitions, what do they mean, sir? See, in today's world, until and unless you have an infantry combat vehicle which can move in any kind of terrain, whether it is high altitude, whether it is jungle, whether it is mountainous, so it's a vehicle which is integrated, and the ability to be able to have on the move, getting all information and be able to transmit information everywhere. And similarly, when we're talking about the ammunition in that context, now looking at something which is, when you look fire and forget, or we call it area ammunition, it's perfectly fine to say that yes, ammunition which is updated, and the infantry combat vehicle which can operate in all kinds of terrain, tough terrain, and to be able to move at an angle and at slopes which invariably you find an ordinary vehicle can't move along. So the requirement is definitely of an infantry combat vehicle which we've been asking for, and I'm sure that now that the government is cleared in the acquisition council to be able to go in for it, and we will now be asking for the RFI will be issued. Therefore, there's a need, and what your second question was about the ammunition part of it. Yes, definitely that is the need of the hour. Sir, the DSE has been meeting regularly. The DSE is also the highest decision-making body of the Ministry of Defence. After this, the systems go on to these things. When they are okayed, they go on to become proposals, and that is the process I'm explaining to the listeners, actually. Sir, the DSE also okayed, which is called technically acceptance of necessity, which means it's the first step of the process, which the DSE is okayed for having autonomous surveillance and armed drone swarm systems, which again will be made in India. As we all know, all the projects are now made in India. Sir, what is this autonomous surveillance armed drone swarms? Surveillance and armed, both. They are 2 separate aspects. What do they mean for the Indian Army at the LOC and at the LSE? See, the Chinese have gone in a very big way. You find even in the Ukraine battle, the battle swinging sometimes both ways, primarily because, again, of the drones are concerned. And now we have swarm drones which have the capacity for surveillance and be able to also take on targets. And that is the reason why the acceptance of necessity that yes, there is a need for swarm drones. And since we ourselves indigenously also, there's enough capacity, enough knowledge, enough know-how of drones is concerned. And the swarm drones, the capability and the capacity, I think a part of it got displayed during the Republic Day also. The same thing, now we'll have surveillance and also military applications which will be put forth. I think this acceptance of necessity by the Defence Acquisition Council for the swarm drones, again, as I said, indigenously designed and developed, with over 60% of the indigenous components we have, and it will be a big thing because we see Chinese using it. We will now see soon Pakistan, which also has drone capability of manufacturing, as also its links with China is concerned, and therefore along the LAC and the LOC swarm drones with the capacity to be able to, for surveillance, interdiction, and be able to take on targets. I think that is extremely important. General Kulkarni, could you please explain to our listeners, how does this swarm drone function? You mean a certain number of drones, a specific number of drones are flown together, they are armed. Can they drop munition onto some enemy post, enemy vehicle? What can they do actually, and how do they function? See, there is categories of drones, and therefore when we're talking about this swarm drone, the word swarm means there's so many drones that will be flown at the same time with capacities and capabilities for dropping, for surveillance, to dropping ammunition, for logistics, and at the same time, should the enemy use anti-drone, you will find not all, the entire swarms of drones will not be able to attack. And therefore, we still have the ability to be able to get surveillance of the enemy area, at the same time be able to drop items of logistics, at the same time also take on the target. So these swarm drones have a capacity and the capability which invariably you will find
then the entire area is something like the bees that you see. Whole lot of bees suddenly swarm any point of time. Attacking a particular area is very difficult. Even if you can knock down 10, you will still have majority of them going through. Similarly, this swarm of those, which will be able to completely have the entire area under surveillance, entire area being logistically sustained, entire area under communication, and be able to take on the relevant targets what it has been designated to. General Kulkarni, we move on to the next projects which the DSC has okayed. The DSC also approved Navy's proposal for procuring an upgraded 1,250 kilowatt capacity marine gas turbine generator for power generation application on both the Kolkata class of warships. This will be through the Indian industry and will give a major boost to indigenous manufacturing of gas turbine generators. General Kulkarni, do we have this technology through the Indian industry when the MOD says it will be through the Indian industry? Because so far all our warships have imported gas turbine engines. How do we absorb this technology? Does the Indian industry have the capacity to make such engines? What is the status? Capacity, yes. Capability, yes. And Navy is the only one arm which has indigenization has extremely high. Out of the 41 ships, almost 39 will be indigenously manufactured. And all of this, especially the Kolkata class ships, would require this marine gas turbines. It's an absolute need. There's definitely a need, and I'm sure the Indian industry would be capable, is capable, and would be able to deliver. And now that we have said very well, it is just not Buy Indian, it is Buy Indian IDDM. That's again and again, I repeat, indigenously design and develop. We have, and we can, and we should. I think that will be a big boost to the Navy, because if this is something which sustains any ship and capacity as large as 1,250 kilowatts, I think, yes, we have, and we should be able to make this marine gas turbine generator. General Kulkarni, the DSC also approved procurement of 14 fast patrol vessels for the Indian Coast Guard. As we all know, after 2008 Mumbai attacks, the Indian Navy was mandated as the prime responsibility of the sea. General Kulkarni, the Coast Guard has grown in the past few years. It now is more than 125 ship force. It has got its own helicopters. It has got its own surveillance planes. These new additions to the Coast Guard, how important are they? Absolutely, to what we have seen and how that actually needs to be dominated. There's no denying the fact, because the Navy almost becomes the blue water Navy stepping out, and it needs to be defended. The kind of thing that we've seen ourselves, it's very important that the Coast Guard needs 14 of these fast patrol vessels, primarily to integrate, to be able to see kind of fishing boats of the other countries that step in, or unidentifiable boats that would have come, something like what Kasab had come into Mumbai. So we have to ensure that these kind of things don't happen. And any interjection, especially today when narcotics are there, types of trade that happens, and high pirates onto this thing. So when you have these fast patrol vessels for the Coast Guard, it adds to the protection of marine. General Kulkarni, Prime Minister Modi announced that we have to be Aatmanirbhar, and the Defence Ministry has taken upon itself to start making equipment in India. General Kulkarni, how does this indigenization factor fit into new technologies and the surprise element for the enemy? Especially after Ukraine and the way the new world order is likely to be, there's absolute necessity that we must be self-reliant, what we call it Aatmanirbhar, and what better than being self-reliant in aspects of military technology is concerned. We were one of the biggest exporters of military equipment and hardware. It will be so much better. Now we've gone in for almost, I'm told, $5 billion of export, which we hope to attain by 2025. If not just that is concerned, this is the need of the hour. And whether it is in small arms, whether it is in aircraft, whether it is in submarines, whether it is in fast patrol boats, whether it is in DPJs, or what could be termed as a marine gas turbine generator, anything and everything, this will add teeth to our military. And if you're not dependent on anybody, especially in matters of security is concerned, because territorial integrity and sovereignty is our responsibility. We can have any amount of treaties with all the kind of countries that we are, but knowing fully well that our enemies, there can be nothing better, and our industry is fully capable. And therefore, if you're fully prepared, if you can deter the enemy, we will never have a war. And that is only possible if you are Aatmanirbhar. General Kulkarni, thank you for speaking to us. Thank you. You were listening to a discussion on Defence Ministry's clearance of Aatmanirbhar Bharat projects worth 29,000 crore rupees. The participants were Lieutenant General Sanjay Kulkarni, Defence Analyst, and Ajay Banerjee, Journalist.
This program was produced and presented by the News Services Division of All India Radio. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may email your opinion about this program at airnsdtalks@gmail.com. ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम मंथन के अंतर्गत प्रस्तुत है किसान क्रेडिट कार्ड के विस्तार पर चर्चा। भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और पत्रकार संजीव मुखर्जी। हरवीर जी, जो मैं आपसे जानना चाहूंगा पहले कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है, जो केसीसी का जो स्कीम है, जो काफी पुराना है, काफी दिनों से चल रहा है, इसमें एक जो बड़ी बात आती है कि ये फार्मर्स के लिए जो सबसे इजी वे ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट का होता है वो केसीसी के थ्रू होता है, लेकिन उसका एक्सपेंशन काफी लिमिटेड है और काफी जगहों पे वो है। सरकार काफी कोशिश भी कर रही है इसको के दायरे में बढ़ाने के, ज्यादा किसानों के लाने के लिए। ओवरऑल इस किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को आप किस तरह से देखते हैं और इसकी क्या आगे वैल्यू है और उपयोगिता रहेगी? असल में देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड अपने आप में किसानों के लिए एक बहुत ही मददगार जो कर्ज का एक रास्ता उनके लिए बना, क्योंकि एक समय में जो एग्रीकल्चर के लिए जो क्रेडिट का जो रेट था, जो ब्याज की दरें थी, वो आपके जो पर्सनल व्हीकल्स के लिए जो ब्याज की दरें उससे भी ज्यादा थी। और ये एनडीए गवर्नमेंट के टाइम में ये इसकी शुरुआत हुई। उस वक्त देखा गया कि किसानों को एक किफायती ब्याज दर के ऊपर उनको पैसा मिलना चाहिए, खासतौर से जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है जिसे फसली ऋण कहते हैं उसके लिए। क्योंकि पहले आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए लें या फिर बैंक्स में जाते थे और उसके लिए आपको जो टर्म क्रेडिट है वो सारी शर्तें काफी मुश्किल था किसानों के लिए। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड बनने से एक राह आसान हुई कि आपकी जो जमीन है उसके ऊपर एक फॉर्मूले के आधार पे आपकी क्रेडिट लिमिट क्या हो सकती है और उसके लिए आपको एक कार्ड जारी कर दिया। आपने जब सारी औपचारिकताएं पूरी की उसके आधार पर उस कार्ड से आप अपनी जरूरत के हिसाब से उसकी लिमिट तक आप बैंक से पैसा ले सकते हैं। एक तो ये हुआ, मतलब एक्सेस थ्रू द क्रेडिट, कर्ज लेने के लिए जो सुगम रास्ता बना वो बहुत महत्वपूर्ण था। दूसरे फिर उसमें अगला कदम आया है इंटरेस्ट सबवेंशन का, यानी सरकार ने कहा कि हम अपनी तरफ से उसमें 2% का छूट देंगे। एक वक्त में 9 रुपया फीसदी होता था ब्याज दर, सरकार ने कहा 2% सरकार देगी, इसमें किसान को 7% मिलेगा। उसके आगे चल के उसमें और सुधार हुआ कि जो किसान समय पर अपना कर्ज लौटा देते हैं उनको फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए वो सबवेंशन उनके लिए 3% और बढ़ गया। सो अगर कोई किसान बहुत बेहतर तरीके से अपना संतुलित तरीके से काम करता है, किसान क्रेडिट पे जो उसका वैल्यू है उसके हिसाब से जो कर्ज लेता है और उसको समय पर चुकाता है तो वो 4% की ब्याज दर पर उसको कर्ज मिल जाता है। तो अपने आप में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय रहा जो कृषि का जो कर्ज है उसका स्प्रेड बढ़ाने में और उसका जो एक नंबर है उसको इंक्रीज करने में, जिससे कि जो इनफॉर्मल सेक्टर से जो कर्ज लेता था किसान तुरंत फसल के वक्त में और उसको उसका बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ता था। सामान्य रूप से देश में माना जाता रहा है कि 3% महीना यानी 36% की दर पर वो लेता था और कर्ज के जाल में फंसता था। तो एक तो ट्रांसपेरेंसी आई कि बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से मिल रहा है, सस्ता हुआ और समय पर चुकाया तो और सस्ता हुआ और उसको पता है कि आपको कर्ज मिल सकता है। तो ये मेरा मानना है कि ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम किसानों को कर्ज मुहैया कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में सामने आया। हाल फिलहाल में सरकार ने काफी सारे बदलाव भी किए हैं। मतलब 2020 में इन्होंने इसका क्रेडिट लिमिट जो होता है इनका बढ़ा के 1,60,000 रुपए कर दिया था, कोलैटरल फ्री लिमिट जिसे कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग और फिशरीज को भी इसके दायरे में लाने की बात कही जा रही है, जहाँ पे छोटे किसान और मझोले किसानों की संख्या काफी ज्यादा होती है। तो इन सब से क्या जो किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा है, तो आज हम कहते हैं कि 7.5 करोड़ जो आंकड़ा है सरकार के पास यही आंकड़ा है कि 7.5 करोड़ किसानों के पास ये किसान क्रेडिट कार्ड है, उसको बढ़ा के जो सारे किसान उसको इंक्लूड हो जाए, पशुपालन किसान भी उसको इंक्लूड हो जाए, तो इन कदमों को आप किस तरह से देखते हैं? एक बड़ी बात है कि हमारे देश में जो कृषि है उसको हमें सिर्फ या किसानों को फसल तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। आपने देखा है कि जो ओवरऑल एग्रीकल्चर और उसके जो सहयोगी क्षेत्र हैं उसकी जो इकोनॉमी है उसमें डेयरी सेक्टर का बहुत तेजी से योगदान बढ़ा है और जो मत्स्य पालन है उसकी हिस्सेदारी भी तेजी से बढ़ी है, हॉर्टिकल्चर की भी बढ़ी है। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो किसान है इनको भी किसान माना जाता है और जिस तरीके का डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है और इनकी जो वृद्धि दर है, विकास दर इन उत्पादों की है ओवरऑल कृषि और सहयोगी क्षेत्र में, वो खाद्यान्नों के मुकाबले काफी ज्यादा है। साथ में किसानों की आय का भी ये एक बड़ा साधन है।
तो ऐसे में जो पशुपालक हैं उनको किसान मान करके उनको भी जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है जो फसल उत्पादक किसानों को मिलता है वो इनको भी मिलना शुरू हो और जो मछली उत्पादक किसान है उनको भी हो। इसके लिए जो डेयरी सेक्टर जो पशुपालन क्षेत्र है उसको और मत्स्य पालन को इसके दायरे में लाया गया। तो उनको भी अब ये सुविधा बढ़ेगी। एक तो ये होगा कि जो नंबर जैसे आपने कहा अभी हम लोग करीब 7.5 करोड़ के आसपास पहुंचे हैं। इवन हमारा जो लोगों की जो जमीनें जिनके पास है जिसे हम लोग लैंड होल्डिंग बोलते हैं उसके आधार पे करीब 14 करोड़ के करीब देश में किसान है। एक तो वहां पर भी जो लोग खेती करते जमीन पर वहां उनको इसके दायरे में लाने के लिए बहुत बड़ी संभावना है। दूसरे ये जो उसके सहयोगी क्षेत्र हैं डेयरी है मत्स्य पालन है और दूसरे उस तरीके के जो कामकाज हैं जो खेती से जुड़े हैं उनको इसके साथ जोड़ने में उनको किस तरीके से कर्ज का एक उनको मुहैया कराने की जो सुविधा है उसको बेहतर किया जाए तो इसको एक्सपेंड करने की बहुत संभावना है। अभी कुछ दिनों पहले एक बात ये आई थी कि केसीसी का जो दायरा है वो सिर्फ उन किसानों तक सीमित रहेगा जिनके पास जमीन है, क्योंकि जमीन के एवज में जो किसान बटाई पे खेती करते हैं या जो टेनेंट फार्मर्स होते हैं उनको उनके दायरे में अभी भी नहीं लाया गया है, ये नहीं लाना मुश्किल होता है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? आगे चल के इनको अगर हम दायरे में लाना चाहते हैं, जो लैंडलेस फार्मर्स जिनके पास जमीन की होल्डिंग नहीं है या जो बटाई में खेती करते हैं, उनको केसीसी में दायरे में लाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? एक तो हमें ये स्वीकारना चाहिए कि हमारे देश में अलग अलग राज्यों में 5-7% से लेके 15-20% तक जो है बटाईदार किसान हैं जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं। उनको जो ये सरकारी सुविधाएं हैं योजनाओं की वो कैसे मिले ये अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन इसके लिए जो लैंड लीजिंग एक्ट का ड्राफ्ट बनाया गया है अगर उसको लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर किसी किसान ने अपनी जमीन दूसरे किसान को खेती करने के लिए दी है, लीज पे दी है, उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसका एक कानूनी रिकॉर्ड होगा, तो फिर जो किराए पर जमीन लेने वाला जो किसान है वो हकदार बन जाएगा इस तरह की सुविधाओं के, क्योंकि उसके पास एक डॉक्यूमेंटेशन होगा। और सरकार खेती करने के लिए किसानों को इस तरह के जो सुविधाएं हैं, वित्तीय सुविधाएं या ब्याज की छूट और या दूसरी सब्सिडी ये सब देते हैं, तो उसका मैं हकदार हूँ। इसके लिए मेरे ख्याल से काफी समय हो गया है कि सरकार के पास इस तरीके का लैंड लीजिंग एक्ट जो है उसका ड्राफ्ट मौजूद है। नीति आयोग की एक समिति, एक सीएसीपी के चेयरमैन थे दिवंगत डॉक्टर टी हक, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी ने ये बनाया था। तो मेरे ख्याल से समय है, मौका है, हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। उससे दोहरा फायदा होगा। एक तो जो ऐसे किसान जिनको वाकई ये सुविधाएं मिलनी चाहिए सस्ते कर्ज की और उनका जो कर्ज लेने के लिए उनके पास एक हक होगा उसका फायदा होगा और चीजों को हम रिकॉर्ड पर ला पाएंगे कि वाकई खेती कौन कर रहा है, किसको फायदा मिलना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में एक एसबीआई की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि केसीसी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनका जो रिन्यूअल होता है हर साल, या जो रिन्यूअल का जो प्रोसेस होता है तो बड़ा ही क्यूम्बरसम होता है, बड़ा ही लंबा होता है, लेंथी होता है। तो उसने रिकमेंड भी किया था कि आरबीआई को इस प्रोसेस को लेंथी और शॉर्टन अप करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और एडवांस करना चाहिए ताकि, और उन्होंने जो कैलकुलेशन किया था वो था कि केसीसी के रिन्यूअल में करीब 45 मिनट से 1 घंटे का टाइम मतलब बैंकिंग सिस्टम में लग जाता है। तो अगर आप 7.5 करोड़ केसीसी को 45 मिनट में रिन्यूअल करेंगे या 1 घंटे में रिन्यूअल करने जाएंगे तो करीब आपका 23 लाख मैन डेज जो कहते हैं, जो है पूरा प्रोसेस को हर साल कम करने में वेस्ट होता है, जो आपका वो टाइम आप आराम से दूसरा फ्रेश लेंडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो उनका जो कहना था कि ये प्रोसेस को आप सिंप्लीफाई करिए और क्यों ना एक ऐसे प्रोसेस में लाइए कि जो केसीसी है वो लाइवलीहुड क्रेडिट कार्ड बन जाए, न कि अब उसको हर साल रिन्यू करें। बनस्पत वो आपको एक बार बन जाए तो हर साल उसके लिए आपको रिन्यूअल की जरूरत न पड़े, वो फॉर लाइफ बना रहे हैं आपके लिए। इन रिकमेंडेशन को आप किस तरह देखते हैं? क्या ये वाजिब है, क्या ये करना चाहिए और क्या ये इनमें फायदा होगा अगर किया जाए तो? मैं देखिए इस बात से सहमत हूं कि इसका हमें कोई रास्ता निकालना चाहिए कि हर साल रिन्यूअल की जरूरत ना पड़े। देखिए ये काफी पेनफुल प्रोसेस है किसानों के लिए भी। बैंक्स ने तो बताया कि उनको 1-1.5 घंटा लगता है एक रिन्यूअल के लिए, लेकिन उसके लिए किसान का जो एक डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो काफी लंबा होता है और उसको कई सारे विभागों के पास जाकर के ये सब जानकारी मुहैया करके और डॉक्यूमेंट्स जो दस्तावेज हैं वो जुटाने होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ डिजिटल उनके पास में उपलब्ध होता है। काफी सारा उनको पटवारी के पास जाना है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाना है, फिर वहां से जमीन के डॉक्यूमेंट निकलवाने हैं, फिर चेक करना है। और दूसरे के इससे कई बार जो डिस्करेज भी होते हैं किसान, उनको काफी दिक्कतें होती हैं। इसमें दोनों के लिए फायदा है कि आप इसको लॉन्ग टर्म बनाए, लाइफ टाइम नहीं बनाते तो कम से कम इसको जैसे एक सामान्य क्रेडिट कार्ड बनता है 10 साल के लिए, तो आप 10 साल के लिए बनाइए। उसमें देखिए जिसने कर्ज लिया है अगर उसने समय से कर्ज नहीं चुकाया तो उसका तो आपके पास रिकॉर्ड रहता है, फिर भी तो उसमें जो सुविधाओं से उसको फिर वंचित कर सकते हैं आपको सस्ता कर्ज नहीं मिलेगा।
जाएगा। तो मेरा मानना है कि जो डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रक्रिया है उससे बचा जा सकता है, और क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा है तो इसमें बिल्कुल इस बारे में सोचना चाहिए रिजर्व बैंक को भी और भारत सरकार को भी। और इसका एक बहुत बड़ी सुविधा होगी किसानों को, सबका काम घटेगा, इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी काम घटेगा। और क्योंकि डिजिटलाइज हो रही है चीजें, सब कुछ चीजें अब आधार से कनेक्ट हो रही हैं, तो आपको आइडेंटिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। जाहिर सी बात है कि किसान जब कर्ज लेता है तो बैंक से ही लेता है, बैंक के पास उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है, कितना कर्ज लिया, कितना जमा किया। तो उसका जो प्रोसेस है, जो एनुअल आप बेनिफिट्स देते हैं, वो उसी तरीके से रखिए। लेकिन जो डॉक्यूमेंट है, जो एक कार्ड है, उसको आप कम से कम अगर लाइफ टाइम नहीं तो 10 साल के लिए रखिए। और उसमें शर्तें हैं कि अगर कोई किसान का बदलती है स्थिति, उस जमीन बेच देता है या और कुछ है, ये उस पर आप शर्त लगा दीजिए कि आपको ये कितने दिन के अंदर आपको सूचित करना पड़ेगा संबंधित विभागों को और बैंक को। तो वो सब आप लगा सकते हैं, लेकिन इसको प्रक्रिया को आसान किया जा सकता है और उसको लॉन्ग टर्म की दिशा में हम लोग जा सकते हैं। और एक बार जो कई बार लोग कहते हैं कि जो पीएम किसान का जो हमारा डेटाबेस है उसको हम अगर केसीसी के साथ मर्ज करें या केसीसी के उस डेटाबेस को यूज करें पीएम किसान वाले को केसीसी को बढ़ाने के लिए, तो हमें ऑटोमेटिकली 12 करोड़ किसान जो पीएम किसान के दायरे में आते हैं वो नंबर इमीडिएटली बढ़ के 7.5 करोड़ से बढ़ के 11-12 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो ये क्या आपको लगता है ये फिजिबल है और ये करना चाहिए कि पीएम किसान का डेटाबेस यूज करके केसीसी का नंबर बढ़ाने के लिए यूज करना चाहिए? नहीं, असल में देखिए, जो पीएम किसान सम्मान निधि है वो यूनिवर्सल स्कीम है कि आपको देश के जितने भी पात्र किसान हैं सबको आपको देना है। उसका जो आंकड़ा सरकार के पास और जो जानकारी है उसके आधार पर कर्ज जो है वो किसी की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि उन सब किसानों को कर्ज लेने की जरूरत हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो बहुत छोटे किसान भी हैं, लेकिन उनको पीएम किसान की मदद तो मिलती है। अगर मान लिया किसी के पास आधा एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, तो उसमें एक तो ये होता है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कमर्शियल वैल्यू है, जो फाइनेंशियल वैल्यू जिसके आधार पर जैसे आपने जिक्र किया था कि उनकी क्रेडिट लिमिट भी बढ़ाई गई, तो क्या फसलें वहां पैदा होती हैं, वो सारा एक उसकी एक प्रक्रिया थोड़ा अलग है। मेरा मानना है कि दोनों को आंकड़ा तो सरकार के पास है और डाटा है, लेकिन ये है कि उसका उपयोग आपको नए कार्ड बनाने में और कार्ड का जो ये है पात्रता है उसको रिकॉर्ड पे लेने के लिए उस डाटा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वॉलंटरी है, जिसको जरूरत है वही आएगा। आप सबको उस तरीके से कार्ड देंगे तो जरूरी नहीं कि उसका जो फायदा हम अपना मान के चल रहे हैं उसका उसी तरीके से फायदा हो पाए। एक चीज जो अरविंद समझ में आती है कि वो है कि केसीसी कुछ ही राज्यों में बड़ी स्ट्रांग है और ज्यादातर जगह पे जहाँ पे क्रेडिट की जरूरत रहती है, जहाँ छोटे मझोले किसान ज्यादा रहते हैं, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया या बिहार हो गया या उड़ीसा हो गई या बंगाल हो गई, वहाँ केसीसी के पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहता है। हालांकि अब धीरे धीरे बढ़ भी रहा है उन सब क्षेत्रों में, लेकिन अभी भी वहाँ पे काफी कमजोर है। तो अभी भी किसान जो है इन सब क्षेत्रों में जो नॉन इंस्टीट्यूशनल मनी लेंडिंग होती है उसी की तरफ आता है और उन्हीं पे निर्भर रहता है। तो क्या इसमें करना चाहिए कि इस तरह से जो केसीसी का जो स्प्रेड है वो इंस्टीट्यूशनल स्प्रेड जो है वो बढ़े और किसान ज्यादा से ज्यादा केसीसी के थ्रू ही लोन ले? मेरे ख्याल से सरकार को और रिजर्व बैंक को और बैंकिंग सिस्टम को एक तो काम करना चाहिए कि जो हमारा कृषि कर्ज है उसका ओवरऑल जो आउटस्टैंडिंग है हर साल कितना होता है ये देखना चाहिए, क्योंकि केसीसी तो एनुअल है। तो उसमें देखना चाहिए कि साल में कितना उठाव है कर्ज का और उसका एक स्टेटस रिपोर्ट हर साल आना चाहिए। क्योंकि अगर आप आंकड़े लेने जाएंगे वो, क्योंकि इसमें काफी सारा ये ओवरलैपिंग होता है या फिर उसको फॉरवर्ड क्रेडिट हो जाता है। तो एक तो ये है, इससे हम असेस कर पाएंगे कि वास्तव में कृषि क्षेत्र को कितना कर्ज उपलब्ध होता है। और दूसरे जो आपने जो महत्वपूर्ण बात कही है कि देश में जो कृषि कर्ज का जो उपलब्धता है या जो आउटस्टैंडिंग है उसमें बहुत ही असंतुलन है। मेरा मानना है कि नाबार्ड को या रिजर्व बैंक को या कोई बड़ा बैंक जैसे एसबीआई ने अभी रिपोर्ट दी है, इसमें एक बहुत मैसिव एक्सरसाइज करने की जरूरत है कि एग्जैक्टली देश के हर जिले में प्रति किसान की जो लैंड होल्डिंग है उसका कितना कर्ज प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ के अनुपात में उपलब्ध है, और उसके बाद फिर करेक्टिव मेजर लिए जाएं कि जहां पर ये उपलब्धता कम है उसके कारक जानने चाहिए और उसको बेहतर करने के लिए जो रेमेडियल स्टेप्स हैं उनको उठाने की जरूरत है। क्योंकि ये अपने आप में देश की जो रूरल इकोनॉमी है और जो कृषि अर्थव्यवस्था है और जो देश के अभी भी एग्रीकल्चर के ऊपर 44% मैन पावर जो है उसका लाइवलीहुड डिपेंड करता है, उसके लिए हमें इन सब कदमों की बहुत सख्त जरूरत है। क्योंकि पहले आप जाने की वास्तविकता क्या है, उसके बाद फिर जरूरी कदम उठाए जाएं। अभी आप सुन रहे थे किसान क्रेडिट कार्ड के विस्तार पर चर्चा। भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और पत्रकार संजीव मुखर्जी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल
न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल का पता है हमारा airnsdtalks@gmail.com। दोबारा सुनना चाहें कार्यक्रम तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर।